आपके अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म इम्पोर्टेंट है इंडिया में, हिंदुइज्म इम्पोर्टेंट है? See, I understand that the discussions revolving around secularism and Hinduism, both of them are crucial. Both of them are important, but important in different contexts. When we talk of secularism, see, it is a fundamental part of the Indian constitution itself, because it is separating the state from the religion. And for that matter, it is also providing some inclusivity, it is providing some diversity and social cohesion. So that is why secularism is important. But when we talk of Hinduism, Hinduism is a fundamental aspect of the entire nation. Hinduism, it has Indian history. Hinduism has rich philosophy, and that philosophy has been empowering a lot of people, young minds and all the generation. So both are important, but in different contexts. Rather than pitting secularism against Hinduism, we should focus on harmonizing both of these concepts. Is it possible? Well, right now, let's first re-examine what the constitution has to say. See, there are dark sides of secularism. And there are dark sides of secularism because we as individuals have not allowed the true essence of secularism to pervade into the society. With this, I mean that there are numerous articles in the Constitution. Let's say Article 14, which talks about equality before law. Article 15, which says prohibition of discrimination. Then again, there's an article saying that you have the freedom to profess and propagate any religion. But is this ultimate rule book just a rule book for that matter? Because I don't see that it has gained any success in differentiating between the minority and the majority in a true aspect. It is working on the minority, that's good, we stand with it, but it is working on the minority on the leveraging the Hindu mindset, Hinduism. So it says that, okay, Hinduism, you need to compromise. When a Kashmiri Pandit is killed, then you are talking of secularism. That's not possible. When you kill a Hindu girl after marriage and talk of secularism, that's not possible. There are such ugly scenarios from the neighboring countries you see. Pakistan, forced conversions. Bangladesh, there's attack on Hindu families and businesses. Then you come to Sri Lanka. Sri Lanka, there are forced extortions. You come to Nepal. There's anti-Hindu propagandas going on. So you are asking the Hindu majority to compromise and then giving benefits to the minority. That should not happen. That should not prevail. And that is not why the constitution was made for. But Hindu आज majorities में है, फिर भी compromise कर रहा है. Why? The Hindu has learned to compromise. They have... Who taught us? They have learned to compromise. Why compromise? Because they don't have the proper knowledge. Our knowledge has been burnt. Our libraries, our temples, our architectures have been burnt. Who burnt them? You very well know the answer. I don't need to take the name of the other religion. That is what we are witnessing. नहीं, पर हम आज आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर किस बात की बात करेंगे हम लोग? खुल के बोल, इसी आप ये बोल रहे हो कि you are very well aware about it. Everybody, not you, everybody is well aware of it. Because if I take the word Muslim कहते हैं भाई भाई, बट एक भाई एक हिंदू बहन पे जो अत्याचार कर रहा है, क्या उस पर हम चुप बैठे और उसके बाद फिर सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़े? माइंड इट, होल्ड द ट्राइकलर राइट. That is actually not possible. We are allowing things to invade within our territory. The Hindu minorities are facing immense torture, tormentation. Do you actually sense that pain of tormentation for just practicing their own beliefs? Why this is happening? Because we are allowing them to.
And who forced us to allow them? I'm using the word force because we are actually being forced to allow them only by the Constitution. Why doesn't the Constitution make some strict laws as to if the majority is harmed, the minority should be convicted? So many cases, burning issues, खुले हैं अखबारों पर हर दिन हर समय. But what we say, secularism. What we are proud of in our country, India, is secularism. We are not against it. But like I told you, when a Kashmiri Pandit is killed, and then you talk of secularism, that is wrong. When a Hindu girl is raped and kidnapped on the name of marriage, and then you talk of secularism, that is definitely wrong. तो ये तो हमारे नेता लोग ही करेंगे ना सब कुछ, वो कर नहीं रहे. नेता प्रोपेगेंडास, यू नो, अगर हिंदू प्रोपेगेंडास. मुस्लिम खत्म कर देंगे तो वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी. हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि आज कहीं ना कहीं हिंदूज अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ नहीं रहे हैं सही से, और जो अदर पार्टी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गलत किताब पढ़ रहा है. आई हैव नो डाउट इन सेइंग दिस. वो कौन सी किताब है जो उन्हें हिंदू भाई और बहन के खिलाफ तलवार उठाना सिखा रही है? किस रिलीजन में यह सिखाया जाता है? क्या आप देश के मुस्लिम युवाओं को एक गलत दिशा दिखा रहे हैं? Who is doing all this? A leader, a Muslim leader who is corrupt? Who is doing all this? A Muslim leader who is propagating the wrong knowledge. I have friends who are Muslims. They are miraculously amazing. I don't even imagine the content or the information that I see in the newspapers or the TV or the media for that matter. They are so different. So there are two types of Muslims, I must say. There are ones who are reading, understanding, and applying the wrong knowledge. Their books are wrong. However, there are Muslims who are abiding by the right scriptures, the rightful words that the Quran says. So the need of the hour is to convict those minorities. We have given you the chance to thrive in this fresh air. Does not mean you will contaminate our air. Does not mean you will not allow us to breathe. बट ये तो यूथ सामने आएगा, दोनों अगर हिंदू मुस्लिम दोनों Youth यूथ सामने सामने आएगा आना चाहता है। तभी तो सब सॉल्व होगा. पर दोनों यूथ भी सामने नहीं आना चाहते. यूथ सामने आ रहा है. कौन कहता है यूथ नहीं सामने आ रहा है? आज आप देखिए रैलीज में तो जाकर फिर आप देखिए लव सबसे जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? जब अगर हिंदू मुस्लिम अगर शादी करता है तो आप उसके अगेंस्ट क्यों है? वो इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि लव जिहाद, ये जो टर्म है ना, इसका जो पहला शब्द है लव, LOVE, लव, ये बड़ा ही सुंदर शब्द है. और आज तक प्रेम की जो परिभाषाएं हमने देखी हैं, चाहे वो आप द्वापर युग से उठा लो, जो प्रेम एक डिवोटी और एक भगवान के बीच में है, जो प्रेम एक माँ और एक बेटे या बेटी के बीच में है, जो प्रेम एक पिता और एक बेटी के बीच में है, आज उस प्रेम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. मुस्लिम कम्युनिटी में एक बाप अपनी बेटी के साथ अत्याचार कर रहा है, तो क्यों ना बात करें हम लव जिहाद की? आज मुस्लिम में एक भाई अपनी बहन के साथ शादी कर ले रहा है, गलत दुष्कर्म कर रहा है. हिंदू फैमिलीज में ये नहीं होता. हम चाहते हैं कि हमारे देश और समाज की बेटियां सुरक्षित रहें. हम क्यों डालना चाहेंगे उन्हें अंधेरे कुएं में? डेफिनेटली हम बात करेंगे लव जिहाद की, और तब तक करेंगे जब तक इनका जो प्रोपेगेंडा है, वो जो कहते हैं ना कि भारत देश का यदि आप नक्शा देखें तो एक सुंदर सी ओढ़नी ओढ़ी हुई है भारत माता ने. उनका मुद्दा है कि इस ओढ़नी को हटा दे. जब इस माइंडसेट के लोग पैदा हो रहे हैं इस देश में, हिंदू बात करेगा लव जिहाद की. इसका पॉलिटिकल एजेंडा से कनेक्शन हो या ना, व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग. गलत की कोई डिफरेंट डेफिनेशंस नहीं होती हैं. जो गलत है वो गलत है.